Right, with that, let's talk about the Indian Parliament that has officially introduced 3 constitutional amendment bills in the Parliament today. The move focuses on 2 things: implementation of the Women's Reservation Bill and carrying out delimitation of the parliamentary districts. To discuss these proposals, the Indian Parliament convened a 3-day special session today, where Union Law Minister Arjun Ram Meghwal introduced 3 bills in the lower house. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Prime Minister Narendra Modi also addressed the Parliament. He said that it is a historic day and that the bills will open the way for women's participation in policy making. He said that women have not forgiven those who have worked to delay the implementation of women's reservation. हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। Now remember that political parties in India's southern states have been opposing delimitation. India's constitution mandates that the allocation of seats should be proportional to the population of states. Because of this, southern states fear losing representation due to higher population growth in India's northern states. In his address to the Parliament, Prime Minister Modi assured that no state will face discrimination. And as elected representatives, members of the Parliament are not allowed to think of India in fragments. चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। Opposition parties argue that the government is trying to redraw India's legislative map to their political advantage. They say that the government should decouple delimitation with women's reservation and give representation to women under the existing composition of the parliament. वैसे आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ये लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण के चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनके पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार-बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं।